बोलो सर. Vansh, bol, what is the meaning of linear? Linear લિનિયર equation. એટલે સ્ટ્રેટ. લિનિયર ઇક્વેશન એટલે એક લાઈનમાં ઇક્વેશન જે આવી જાય. ના. Linear એટલે equation. એમાં પાવર એની 1 હોય દરેક ઓલાની. Very good. Power, highest power. શું હોવે? Highest 1. power જ્યારે એની 1 હોવે, or it is also called as degree of equation is 1. And such type of equations are called as what? Linear equation. The degree of equation whose highest power is 1 is called as linear equation. મારા ખ્યાલથી આપણે ભૂમિને પૂછતું, ભૂમિ તમે 10th 11th standard માં you had done the linear inequality. Do you remember what are the three different types of lines? Or Three. first type of line bol. First type of line. Do you remember any type of line you had done? नहीं? जानवी परमार. हाँ, ये थोड़ी तकलीफ છે યાદદાસ્તમાં. બદામ ખાઓ બદામ. जानवी परमार. हाँ सर. तू बोल. हाँ. नहीं? याद નથી. भूमि वंशिका. So parallel lines. Parallel lines are said in by what equations? X equals to 0. A. हाँ, and Y equals to B. Perfect. Single variable lines are called as what? Parallel lines. So parallel lines. These lines are parallel to either x-axis or they are parallel to what? Y-axis. X-axis or Y-axis. Vanshika, तुझ बोल. Which line out of this x equals to and y equals to b? Which line is parallel to x-axis? Sorry, so repeat करसो. What will be the equation of the line which is parallel to x-axis? X છે, x dash છે, y છે, y dash છે. What will be this line? X equals to a. Okay, y equals to. What will be the equation of this line which is parallel to x-axis? Y equals to B. Perfect. Y equals to b. And if line is parallel to y-axis, then what is the equation? X equals to A. Perfectly. X equals to A. So all those lines which is x equals to A parallel to y-axis, all those lines which is y equals to b parallel to what? x-axis. x-axis को parallel होने वाला हमेशा y equals to, y को कट करने, y को axis को कट करने वाला y equals to, x को कट करने वाला x equals to. But they are parallel to opposite axis. x equals to मतलब y को parallel, y equals to मतलब x को parallel. ये 9th standard से आप लोग पढ़ते आ रहे हो. 9th standard, not from now. भूमि 9th standard की भनो तुम्हें. How you can forget? Okay, next. अगर मैं बात करूं, मेरे ख्याल से वंशिका ने आंसर दिया था. So now I want the answer from नियति 17, SIS college. सोम्या कॉलेज का हो गया. SIS college. Can you tell me what are another equation of line you have studied? What is another equation of line you have studied? नियति 17 आई છે બેટા? हाँ सर. Sir, x upon y plus y upon b is equal to 1. Another word I can say ax plus by is equals to c. Ax plus by equals to c, where you can easily find its x-intercept, that is c by a, and y-intercept is what? C by b. You have studied in your 11th standard also directly c by a and यहाँ पर c by b. तो ये लाइन यहाँ से ऐसा पास होते हुए दिखाई देगा. This line is what? Ax plus by equals to c. The second type of line is a line which intersect x-axis as well as what? Y-axis. These are the lines, they only intersect either x-axis or y-axis. This is a line which intersects both x-axis as well as what? Y-axis. This is the second type of line which is said by what? SIS college नियति 17. Shruti Mulchandani, is there any third type of line you have studied? Yes, sir. What are that line?
ax is equal to by. Perfect. Ax plus by equals to 0, or ax is equals to by where there is no constant term. What is the significance of this line? It passes from origin. Perfect. Perfect. These lines are the lines which pass through what? Origin. ये line वो line है जो pass होती है कहां से? Origin से. So one point is fixed 0,0. Just you have to find other point, plot the graph and just draw the line. These are only the three basics line you are studying right from 9th standard. 9th से आप पढ़ रहे हो, आप देख लो, आपको चाहिए तो टेक्स्ट बुक खोल के 9th 10th 11th का टेक्स्ट बुक खोल के देख लो, आपने ये तीन टाइप के ही लाइन पढ़े बचपन से. Line which are parallel to either x-axis or y-axis, which is given by x equals to or y equals to. ये सब चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए. The line which is parallel to x-axis as well as y-axis, intersecting x-axis as well as y-axis, is given by ax plus by equals to c, whose intercepts are x equals to c by a and y equals to c by b, and this line intersects x as well as what? Y. There is a third type of line which is passing through what? Origin. Which is passing through what? Origin, and that does not contain constant term in their equation. So in all together there are only and only three types of line in a linear equation which we had studied and which we are going to study in further portion also. Anyone has any doubt regarding these three types of line? किसी को कुछ problem है? Okay, I am going for a bit revision of your 11th standard related to inequation. I am going to teach you the small things related to your inequation का बारे में आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ, याद कराने का ट्राई करता हूँ, आपको याद रहेगा ही. Again, just I am bringing in your notice. First inequation याद रहेगा तो that was inequation. फिर हम लोग टेबल बनाते थे, याद है तो it was all about what? Equation. याद आया ही होगा. फिर हम यहाँ पर लिखते थे कुछ तो डिस्क्रिप्शन अथवा इंटरसेप्ट्स. फिर बाद में हम लिखते थे यहाँ पर ऑल अबाउट योर पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स आता है. ये पूरा हम लोग ने हमारे 11th स्टैंडर्ड में ध्यान से समझ किया था. मैंने ज्यादा एम्फेसिस दिया था बिकॉज इट इज देयर इन योर shaded region, and the last one is all and all about your graph. Graph कैसा दिखेगा? So this is what we are going to study today. First line ever we had studied in our lower standard also, that is x is less than equals to a. This line is always equals to what? X equals to a is its equation. अगर याद रहेगा डिस्क्रिप्शन में तो लिखते थे हम लोग this line is parallel to y-axis and intersect x-axis at a comma 0. So you have only one point, a comma 0. बराबर है? Okay, very good. मेरे ख्याल से आयुष रजावत, तुझे याद है x लेस देन इक्वल्स टू a मतलब शेडेड रीजन कहाँ पर आता? 11th स्टैंडर्ड में किया था हम लोग ने. आयुष रजावत, यस सर. कहाँ पर आता है बेटा? राइट हैंड साइड में आएगा. देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड समझ में आता है बेटा? तो मैं एक थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ. ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका लाइन है जो x इक्वल्स टू a है. अब 1 के 2 राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड x लेस देन बोलेगा तो 1 नंबर पे शेडिंग करूं कि 2 नंबर पे शेडिंग? 2 नंबर पे. तो राइट हैंड साइड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हुआ? राइट हैंड साइड. भाई ये साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं. ये साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड. लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ x इक्वल्स टू a. उसको क्या बोलते हैं रजावत? लेफ्ट हैंड साइड. लेस देन बोलेगा तो लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं बेटा. याद रखना बेटा ध्यान से. x ग्रेटर देन इक्वल्स टू a.
x इक्वल्स टू ए होगा. मैं डिस्क्रिप्शन वापस से सेम नहीं लिखता हूँ बिकॉज इट हैज अ सेम टू सेम डिस्क्रिप्शन. पॉइंट्स विल बी आल्सो सेम, a कॉमा 0 छोटा इसलिए लिख डालता हूँ. ओके, नाउ आयुष वैजानी, सब अ वालों को पकड़ता हूँ. आयुष वैजानी, क्या तुम हाँ सर, राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड ऑफ x इक्वल्स टू a. परफेक्ट, मतलब 1 के 2. 1. ये हमारा लाइन होगा, ये आपका y डैश, y x x डैश सबको याद आ गया रहेगा. x इक्वल्स टू a किसी को याद नहीं आया रहेगा तो बोलना. ये हमने बचपन में किया हुआ. ये लाइंस है, इसके लिए एरोज आएंगे, एरोज भूलना नहीं. और उसके कॉर्नर पे उसका लाइन इक्वेशन एंड राइट हैंड साइड में आएगा. परफेक्ट, वेरी गुड. नेक्स्ट वन, y लेस देन इक्वल्स टू b, मतलब y इक्वल्स टू b होगा. इसका डिस्क्रिप्शन भी सेम है, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है तो लिख देता हूँ. दिस लाइन इज पैरेलल टू, क्या आएगा, x एक्सिस. दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड इंटरसेक्ट, थोड़ा सा स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए था, y एक्सिस एट 0, b. तो आपका पॉइंट आएगा 0, b. तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी अंश कोई है इसमें, अंश मोदी के अलावा? नहीं है. तो ये से कौन? वंश है, वंश. आयुष सजावत हो गया, अंश ठीक है. मुझे ईशा, ईशा की इशिता, मेरे ख्याल से इशिता है यहाँ पर. हाँ सर. बोलेगी क्या आएगा y लेस देन इक्वल्स टू b के लिए इक्वेशन. मैं यहाँ पर चाहिए तो लाइंस बनाता हूँ. अभी मेरे ख्याल से लाइंस कैसे बनती है वो आपको मालूम है. हाँ, y इक्वल्स टू b x x डैश. क्या आएगा इसका शेडिंग रीजन? याद है आपको, लेस देन इक्वल्स टू b रहेगा तो y लेस देन इक्वल्स टू रहेगा तो. इशिता हाँ के ना बोल दो. नीचे નું જે એરિયા છે ને इंग्लिश में बोल. ડાઉનવર્ડ बिलो, बिलो શું કહેવાનું એને? બિલો. बिलो શું કહેવાનું? बिलो, बिलो y इक्वल्स टू b. वेरी गुड. मतलब નીચેની સાઈડ આવશે. ગુજરાતીમાં બી કીધું એટલે ઘણા જણાને સમજાઈ ગયું. वेरी गुड. नेक्स्ट पूर्वा. पूर्वा, अगर मी सांगणार y ग्रेटर देन इक्वल्स टू b आहे, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो y इक्वल्स टू b डिस्क्रिप्शन सेमच असणार. तो यहाँ पर 0, b असणार. तुला कळत आहे काय होणार आता इकडे? काय कळतंय. ना? above y is equal to b. व्हेरी गुड. अबव y इक्वल्स टू b, मतलब खाली शेडिंग येणार की वरती शेडिंग येणार लाईनचे? वरती. परफेक्ट. लाईनची शेडिंग, लाईन केली त्याची वरती आम्हाला शेडिंग करायची आहे. y इक्वल्स टू y आणि इकडे y डॅश x आणि इकडे x डॅश. These are the 4 basic things related to what your single variable x less than equals to 0, y greater than equals to 0. आप लोग please लिख दो. I'm giving you 5 minutes to write this thing. Write it systematically. Most important. Clear है तो screenshot ले लो, काम आ जाएगा कभी. आडी કરીને કરવાનું છે, वो गाड़ी ले. स्क्रीनशॉट ले लेजे પછી લખી લેશું. Once to pause कर दे. दो, please concentrate here all of you know. ax plus by less than equals to c, or equations can be ax plus by greater than equals to c. दो पॉसिबिलिटी, ax plus by less than equals to c और ax plus by greater than equals to c. दोनों के लिए इक्वेशन सेम लिखना पड़ता है. ax plus by equals to c होंगे. यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यू हैव टू फाइंड इंटरसेप्ट. डिस्क्रिप्शन में आपको क्या फाइंड करना पड़ता है? यू हैव टू फाइंड व्हाट? इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट मतलब क्या? x इंटरसेप्ट इज व्हाट? इट्स c by a and y intercept is what? c by b. Your x intercept is what? c by a and your y intercept is what? c by b. Once you will get the intercept, so you will get the point. x इंटरसेप्ट का बन जाता है c by a, 0. y इंटरसेप्ट का बन जाता है 0, c by b.
0,c/b। अब यहाँ पर एक पहली बात तो समझा देता हूँ, चाहिए तो एक आध दो सब, हाउ टू फाइंड अ लाइन, हाउ टू ड्रॉ द लाइन। 5x + 3y इक्वल्स टू, अगर 15 है तो आपका x इंटरसेप्ट क्या होगा, 15/5, दैट विल बी 3। योर y इंटरसेप्ट विल बी व्हाट, 15/3, दैट विल बी व्हाट, 5। एकदम सिंपल, एकदम इजी पड़ता है। इसका मतलब जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका x कोऑर्डिनेट विल बी 3 and y कोऑर्डिनेट विल बी 5 and just you will draw like this. This is what your graph. Okay, खत्म। फटाक करके लाइन ड्रॉ करके मिल जाता है। अगर मैं बोलूंगा 2x - 3y लेस देन इक्वल्स टू 6 या इक्वल्स टू 6 पहला, तो इधर आपका x इंटरसेप्ट 2 आता है, y इंटरसेप्ट आपका आता है x इंटरसेप्ट आपका आएगा 3, y इंटरसेप्ट आएगा आपका 2, नहीं y इंटरसेप्ट -2, y इंटरसेप्ट क्या आएगा, -2। तो हम जब लाइंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको x 3 है तो x 3 एंड y -2 है तो नीचे जाएगा -2, सो योर लाइन विल बी लाइक दिस। सो दिस इज योर लाइन। यहाँ पर आपको समझाया मैंने हाउ टू जस्ट ड्रॉ द लाइन बाय लुकिंग टू दिस मच ओनली। आप पटाक करके मिल सकता है, जो है इक्वेशन लिखो, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट ढूंढो। x इंटरसेप्ट मतलब x कोऑर्डिनेट का कहां पर इंटरसेक्ट करता है, y इंटरसेप्ट मतलब y कहां पर इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट्स को प्लॉट करके वी विल गेट द आंसर। एग्जैक्ट कैसा ग्राफ ड्रॉ करने का वी विल सी व्हाइल ड्राइंग द ग्राफ, अभी समझाने के लिए। मेन इज व्हाट हियर टू फाइंड द शेडेड रीजन। याद रहेगा आपको फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या था, कंपल्सरी पुट x equals to 0 and y equals to 0 in equation, x equals to 0 and y equals to 0 in equation, मतलब फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर if you're finding if satisfy, अगर वो satisfy कर जाएगा condition, then if satisfy, then shaded region is what, origin side. Your shaded region is what, origin side. अगर satisfy कर जाएगा तो आपका shaded region origin side। मतलब क्या, मतलब जब आप एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ करते हो, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, ये c/b 0, c/b c/a, 0, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तब याद रखना, बचपन में मेरे ख्याल से 7th 8th के 9th स्टैंडर्ड में सीखा रहेगा, दिस लाइन, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस 0, this line divides the plane into two parts. One line always divide the plane into two parts. So one part contains here, always contain here 0, 0. Other part does not contain 0, 0. ये लाइन जब कट करता है, ड्रॉ करता है, it divides the plane into two parts always. One part contains 0, 0. One part does not contain 0, 0. The part which contains 0, 0, we call it as origin side. The part which does not contain 0, 0 is called as non-origin side. जो पार्ट में 0, 0 आता है, x एक्सिस y एक्सिस इंटरसेक्ट करती है, उस पार्ट को हम लोग ओरिजिन साइड बोलते हैं। जहां पर वो दिखता नहीं है उसको हम लोग नॉन ओरिजिन साइड बोलते हैं। तो लाइन का दो पार्ट होता है, ओरिजिन साइड अथवा नॉन ओरिजिन साइड। जैसा उसमें था लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अबव, बिलो, तो ये ऐसे लाइंस के लिए, क्रॉस लाइन के लिए ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। अब सेटिस्फाई कर जाएगा मतलब ये इसमें सब्स्टिट्यूट करें, सपोज ये यहाँ पर लिखता हूँ लेस देन इक्वल्स टू 0, तो x में 0 y में 0 डाला हमने, एज्यूम करने का है कंपलसरी 0, 0 डालना है, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 15। हाँ ट्रू, ट्रू मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये कंडीशन के अंदर ये पॉइंट आ सकता है। अगर ये पॉइंट आ सकता है तो उसके आजू बाजू में जितने भी पॉइंट्स है वो सब आ सकते हैं बिलो द लाइन। इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन साइड। इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन साइड। तो ये बन जाता है आपका ओरिजिन साइड। ये पूरा बिलो द लाइन को हम लोग क्या करते हैं, शेडेड रीजन करते हैं,
और बन जाता है ओरिजिन साइड। क्यों? क्योंकि अगर एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो उसको बोला जाता है उसके आजू बाजू में जितने भी पॉइंट थे वो सब सेटिस्फाई करते हैं। कैसा अपना बीएमसी में एक बिल्डिंग में अगर एक केस आया, सपोज अपने बिल्डिंग में कैसा होता है कंटामिनेट का, कोरोना का एक केस आया, तो बीएमसी क्या करती है, पूरा बिल्डिंग को सील करो। क्यों? क्योंकि पूरा एरिया क्या होगा, हो सकता है कि वो भी सब कंटामिनेट हो गए हो। वैसा ही अगर एक सेटिस्फाई हो रहा है तो पूरा एरिया क्या हो गया उसका आजू बाजू का, बिलो दिस बॉर्डर, वो लाइन उसका बॉर्डर है, उसको सब कुछ शेडेड करो। दिस इज व्हाट अ वे एक्चुअली हैपेंस, और ये लाइफ ऐसा ही होता है। तो ये हमको मैथ्स भी समझाता है, एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो आजू बाजू के सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। वैसा ही इफ नॉट सेटिस्फाइड, if not satisfied, it does not satisfy, मेरे इंग्लिश बराबर नहीं रहेगा, आप ठीक से लिखना, then answer is what, non origin side, answer is what, non origin side। मतलब ग्राफ जो बनेगा आपका ये ऐसा ही होगा, c by a, 0, 0, c by b, ये आपका ओरिजिन। अब डज नॉट सेटिस्फाई है तो मतलब ये पॉइंट नहीं आ रहा है तो उसके आजू बाजू के भी पॉइंट नहीं है सर, तो कौन सा साइड है, दो ही, या तो इधर या तो उधर, दो ही साइड हो सकता है इसका, लाइफ का दो ही है, हेड्स और टेल, टेल है तो टेल नहीं तो हेड, जैसा यही है वैसा, हाँ तो हाँ नहीं तो ना, कोई ऐसा नहीं बोल सकता है पची कहूँ छू, या तो नीचे या तो ऊपर। वैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम x में 0 डालते हैं, y में 0 डालते हैं, तो 0, 0 डालने से क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो 0, 0 डालने से क्या हो जाएगा, वो नहीं सेटिस्फाई करता है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब वो ओरिजिन साइड कंसिडर नहीं होगा, इट विल बी नॉन ओरिजिन साइड, योर आंसर विल बी नॉन ओरिजिन साइड। So this is an example which I set for you, origin side and what, non origin side। कोई बंदा है यहाँ पर के नहीं समझा सर हमको तो बोल सकता है। सर सर एग्जाम्पल में आपने अलग टाइप का लाइन दिया और जब वो टेबल में लिखा है वो अलग टाइप का लाइन। हाँ तो मेन एम क्या था मेरा आपको समझाना कि ये लाइन का भी दो पार्ट है, या तो ओरिजिन साइड इधर इसका ऊपर है और नॉन ओरिजिन साइड इसका नीचे है। ये टाइप का लाइन में नॉन ओरिजिन साइड ऊपर है और ओरिजिन साइड नीचे है, और इसमें ऊपर अरे उल्टा है, कुछ भी आने दो, वी आर नॉट कंसर्न कि वो कहाँ पर है, वी आर ओनली कंसर्न कि सेटिस्फाई होता है तो ओरिजिन साइड को शेड करने का, नहीं होता है तो नॉन ओरिजिन साइड को शेड करना, लाइन कैसा भी हो, दैट इज व्हाट माय कंसर्न। और एक इसमें एक ऐसा मैंने देखा हुआ है, आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में वो सब में फास्ट कर सकते हैं काम। इफ नोट है ये, आप लिख के रखो तो अच्छा रहेगा। इफ एक्स इंटरसेप्ट, ये नोट है, ये हमने ऑब्जर्वेटिव देखा हुआ है। इफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, इफ एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट आर पॉजिटिव, हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड कर लिया और दोनों पॉजिटिव है, तो ये सब कंडीशन में डाल के मगजमारी मत करो, ये सब कंडीशन में डाल के मगजमारी मत करो, सीधा हम बोल सकते हैं लेस देन इक्वल्स टू ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड ये वाला साइन मतलब ओरिजिन साइड, और ये वाला साइन मतलब नॉन ओरिजिन साइड। अगर x एंड y दोनों पॉजिटिव आया तो, दोनों पॉजिटिव आया तो ओरिजिन साइड एंड नॉन ओरिजिन, तो चीटिंग है। रियलिटी में तो ऐसा सब्स्टिट्यूट करके ही चेक करने का तो परफेक्ट ही आता है, कभी रॉन्ग नहीं होगा। चलो फटाफट लिख दो, ये तो ऐसा स्क्रीनशॉट गिरा दो, वंश थोड़ी देर तो बंद कर दे वापस से रिकॉर्डिंग, करो रिकॉर्डिंग। चलो now we are going to see Pachu take action. We are going to start with the third type of line, ax plus by less than equals to 0 or ax plus by plus भूल गया, ax plus by greater than equals to 0, or it is also ax less than equals to by or ax greater than equals to by. બધાનું equation writing is one same, ax plus by equals to 0.
આમાં we have to make your table એક fixed છે point that is going to pass through origin only. Other we have to find. For example, આપું છું x less than equals to 2y હશે તો યા તો 2y less than equals to x હશે તો તમારું ઇક્વેશન આવશે 2y equals to x. તો આનું તમે બોક્સ બનાવશો. that will be x y x comma y. એક compulsory 0 0 હશે ને હશે, that will be 0 comma 0. બીજું તમારું x ની વેલ્યુ લેવાની, that you will take, suppose anything you can take. Suppose I am taking 1, sorry 2, so y will be what? 1. If you will take x equals to 2, y will be 1, so other point will be 2 comma 1. Now to plot the graph of this equation, you should be known very properly. એક તો 0 comma 0 છે જ, બીજું x2 છે, y1 છે, so somewhere point will be inside the graph. This will be plotting of point 2 comma 1. પછી આ point અને આ point we have to extend. A line છે એટલે arrow આવશે આવશે ને આવશે જ. So this is a line. This is what how we should draw the line compulsory. હજી એક example દો. y is greater than equals to 3x. y is greater than equals to 3x. શું કરવાનું તમને લોકોને compulsory x y x y નું ટેબલ બનાવવાનું છે. 0 0 0 0 एक फिक्स पॉइंट है. दूसरा पॉइंट के लिए आप कुछ भी सोच सकते हो. सपोज आपने x1 सोचा तो y3 आएगा. बस दो ही पॉइंट देखने का है हम लोग को, 1 3. देन यू विल प्लॉट द y एक्सिस, x एक्सिस x x डैश y y डैश. एक पॉइंट फिक्स हो गया, दैट इज 0 0. दूसरा पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर किधर तो आएगा, that will be 1 3. Now you will join these 2 points. This is a line of x equals to what 3y. आपको समझ में आया रहेगा how it works out. We have to find. आपको ये पॉइंट आएगा. तो एक पॉइंट तो फिक्स है 0 0. दूसरा we have to find. वहां पर क्या रहेगा, we have to search and we have to write it down. ये किसी को तकलीफ हुआ सर ये लाइन कैसा ड्रॉ करने का समझ में नहीं आया, अगर आया है तो ही हम आगे बढ़ेंगे. ओके, किसी ने डाउट नहीं पूछा, आई एम गोइंग अहेड. अब यहाँ पर शेडेड रीजन फाइंड कैसा करने का, तो इसका एक सिंपल आइडिया है. क्या करना पड़ेगा, पुट x equals to 1 and y equals to 0. यहाँ पर क्यों हमने 0 0 नहीं लिया, क्योंकि लाइन 0 0 पे है, वो वहां से ही पास होगी, तो इसके लिए वो पॉइंट नहीं ले सकता है. हमने आपको अभी भी समझाया कि ये लाइन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है, ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट. तो नीचे का कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे मैं ले सकता था, 1 0 2 0 3 0 4 0, कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ. आप बोलेगा सर मुझको ऊपर का लेने का, तो आप ऊपर का भी ले सकते हैं. हम सबके लिए यूनिफिकेशन रखेंगे, हम 1 0 सबके लिए लेंगे. अब अगर ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो उसका मतलब क्या हो गया, वो बाकी के इसके आजू बाजू में जो भी पॉइंट है बिलो द लाइन विल गेट सेटिस्फाइड. विल गेट व्हाट, सेटिस्फाइड. ये पॉइंट के आजू बाजू में जो भी है विल गेट सेटिस्फाइड. मतलब ये जो इन इक्वेशन है दैट इज व्हाट 2y लेस देन इक्वल्स टू x, इसमें y के जगह पे 0 एंड कंपल्सरी x के जगह पे 1. इज 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, हाँ के ना. अगर हाँ है तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है इन इक्वेशन. अगर ये पॉइंट इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके आजू बाजू में जितने भी पॉइंट्स है वो सब सेटिस्फाई करेंगे. इसके लिए आपका आंसर क्या आएगा, बिलो द लाइन. इसके लिए आपका आंसर क्या आएगा, बिलो द लाइन. मतलब इंक्लूड्स हम लोग लिखेगा इफ satisfy then includes 1 0. shaded region includes 1 0. अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है, फॉर एग्जांपल ये लेता हूं मैं, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x था, तो यहाँ पर मुझे y के जगह पे 0 लेना है, लेस देन इक्वल्स टू 3 into 1. इज 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है. सच बात, हमने यहाँ पर भी वही डाला, सेटिस्फाई करके देखने के लिए चेक किया.
क्या सेटिस्फाई कर रहा है? क्या 0 3 से बड़ा हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है तो मतलब नीचे शेडेड रीजन नहीं आएगा। शेडेड रीजन कहां पर आएगा? कंपलसरी ऊपर आएगा। मतलब डज नॉट, मतलब इफ नॉट सेटिस्फाई, इफ नॉट सेटिस्फाई, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है देन डज नॉट इंक्लूड 1,0, मतलब उसका शेडेड रीजन ऊपर के साइड आएगा। 1,0 जहां पर है वो पॉइंट का शेडेड रीजन नहीं आएगा। आई होप सो सब कुछ समझा। कोई है ऐसा कि सर नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछो, और एल्स यू कैन स्टार्ट राइटिंग। સર 1,0 એટલે આપણે ઈ સમજવું પડશે. हाँ, तू कोई भी લઈ શકે, 2,0 3,0 भी લઈ सकते. 1,0 સ્મોલેસ્ટ છે એટલે મેં એ કન્સિડર કર્યું. અચ્છા સર પોઈન્ટ્સ વાળા કોલમમાં શું લખ્યું છે? 0,0 અને બીજું ખબર નથી, એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. સર પણ આમાં આ વાળું ઇક્વેશન કેવી રીતે આવી શકે? કયું વાળું બોલ ને બેટા? ax plus by વાળું is less than equal to 0 અને એના નીચે વાળું આમાં તો ખાલી આ ઇક્વલ વાળા જ આવશે ને, બે થર્ડ અને ફોર્થ. હા હા, આ વસ્તુને ત્યાં લઈ જા ને, આ વસ્તુને ત્યાં લઈ જા તો આ સેમ થઈ ગયું. સર ઇન્ક્લુડ 1,0 કર્યું તો એને માર્ક કરવાનું જરૂરી છે? ખાલી આમ શેડેડ કરવાનું, બીજું કઈ નહીં. તો 1,0 ને માર્ક નહીં કરવાનું? ના ના ના, એ જરૂર નથી. સર તમે બસ સમજાવવા માટે કહેવાનું. જાઓ તો માઇનસ નહીં થઈ જશે, માઇનસ by. હા, પણ તમને એક્ઝામમાં આવી રીતે જ આપશે બેટા, 2x minus y less than equals to 0. તો શું થઈ જશે બેટા? એ 2x less than equals to y. યા તો તને આપશે y minus 3x less than equals to 0. તો શું થઈ જશે? y less than equals to 3x. સમજાય છે? તને એ લોકો આવી રીતે જ આપશે. મતલબ તમારી લાઈન કમ્પલસરી ફર્સ્ટ અને થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ થી જ પાસ થતી હશે. તમારી લાઈન થર્ડ અને ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ થી જ પાસ થતી હશે. પૂછો, કાઈ ડાઉટ હોય તો પૂછો. Meanwhile, write it down all of you, please. Now do it fast. સર આ ડિસ્ક્રિપ્શન એક જણા બોલો તો I can understand. હા, કોઈ ચીટિંગ મેથડ છે આમાં? શું કહે છે? કોઈ ચીટિંગ કોઈ બીજી મેથડ છે method? આમાં? ના 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 ના, આ સમ મોસ્ટ વોલેટાઇલ છે, કેમ કે ટેક્સ્ટબુકમાં બી એકાદ બે સમ હાર્ડલી આપ્યા છે, એટલે આ યાદ રાખવાનું તકલીફ છે. ખાલી Sir, એટલું જ યાદ રાખવાનું, આમાં 1,0 સેટિસ્ફાય થાય છે કે નહીં ચેક કરવાનું. થોડું કરો. એટલે બીજો કોઈ પોઈન્ટ લઈ શકે ને? ક્રિશ, હા લઈ શકે, લઈ શકે. આપણે સ્ટેન્ડર્ડ બનાવશું 1,0. યુ કેન ટેક એની પોઈન્ટ, નો પ્રોબ્લેમ. આવું કઈ સ્ટ્રિક્ટ નથી કે તમે આ જ કેમ લીધું. ઓકે, યુ કેન કન્સિડર એની પોઈન્ટ બિલો ધ લાઈન ઓર અબવ ધ લાઈન. અગર એ ત્યાં પોઈન્ટ સબસ્ટિટ્યુટ કરીને ચેક કરવાનું સેટિસ્ફાય થાય છે તો ધેટ્સ ધ શેડિંગ રીજન કમ. ચલો આપણે પૂછીએ વન બાય વન. નિયતિ ગાલા. હા, નિયતિ ગાલા, તું મને બોલ. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન વાંચશે તારા પાસે ઓલું છે ને શીટ મારી, વર્ડ પ્રોબ્લેમ ના પછીનો ફર્સ્ટ ટર્મ. હે, એક મિનિટ ઉભી રહે, એ પછી પહેલા બોલ x greater than equals to 0, y less than equals to 0. Please see here now, this is the objective type of questions that they are normally going to ask you in your exam. X greater than equals to 0, y less than equals to 0, which quadrant you will get shaded? आपका कौन से quadrant में answer is possible? In which quadrant? Niyati Gala, can you able to judge in which quadrant you will have this shaded region? If x is getting equal to 0, y is less than equals to 0. બધા લોકો બી સોચો તમારો કયા ક્વોડ્રન્ટ માં આન્સર પોસિબલ છે. નિયતિ ગાલા, फोर्थ वालों बाकी का लोग फिंगर से दिखा सकता था, ऐसा भांडी मत फोड़ो यार. पूर्वा गुड गर्ल. नहीं तो क्या होता है कि जो आंसर देता है उसका लूल हो जाता है. हाँ ठीक है. अब यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट. क्यों फोर्थ क्वाड्रेंट? अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड.
आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज पॉसिबल, फर्स्ट एंड फोर्थ इज पॉसिबल। ये आपका फर्स्ट बोला जाता है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ इज पॉसिबल। लेस देन इक्वल्स टू बोलेगा तो वो बिलो हो जाता है, मतलब सेकेंड एंड फोर्थ पॉसिबल। तो कॉमन रीजन कौन सा आ जाता है आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट। सो योर आंसर इज व्हाट? फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से वो लोग पूछते हैं योर विच क्वाड्रेंट यू विल हैव अ आंसर। चलो और एक को पूछता हूं मैं, बी रेडी। मैत्री, कैन यू टेल मी x लेस देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, विच क्वाड्रेंट? x लेस देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के फोर्थ क्वाड्रेंट इज योर आंसर? मैत्री मेहता। So wait. बाकी का लोग ऐसा फिंगर्स करके बोल सकते हैं, मैं देख लूंगा। ओके बहुत जन ने बोल दिया है। मैत्री तू खाली इधर ही बोल। मैत्री तो फिंगर कर दे, वांदा नहीं। Third or मैत्री कितना? second or third. ये क्या चॉइस करने को नहीं बोला, कौन आते लगन करवा नीचे, फर्स्ट थर्ड दिया तो सेकंड आते, एक का आंसर आवશે। Second. પાક્કું બોલ, નહીં તો હું બીજાને પૂછું છું। જૈનમ ને પૂછું, જૈનમ એસ सेकंड। પાક્કું? नहीं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x લેસ દેન કહેવાય ટોપા। IG પણ છે सेकंड। પાક્કું? હા પાક્કું। Okay, yeah. Answer is what? Second quadrant, 100%. Why? Because x less than बोला है, less than बोला है तो कहाँ पर आएगा? लेफ्ट हैंड साइड। ग्रेटर देन बोला है तो क्या आएगा? above. So definitely लेफ्ट हैंड साइड, तो ये पीछे जाने का, above मतलब आगे आने का, तो कॉमन रीजन इज व्हाट? सेकंड क्वाड्रेंट। वेरी गुड जैनम। ओके जैनम टी, अगर मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा तो क्या आएगा? ग्रेटर देन છે તો રાઈટ સાઈડ આવશે અને y બી ગ્રેટર છે તો 1। પરફેક્ટ 1। આ તો આપણે લોકો 11th સ્ટાન્ડર્ડ માં બધા સમમાં લખતા હતા, x greater than 0, y greater than equal to 0 indicates shaded region lies in first quadrant. It always indicates that your shaded region always lies in what? First quadrant. Very good. Okay, next level पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो हिया डोशी तो फर्स्ट क्वेश्चन वास्ते सर एक सेकंड। થોડું માઇક નજીક લેવાનું, ફટાફટ વાંચ। अरे सर आप खुलતું નથી। જાનવી ઉડાની તું આવી છે? જાનવી ઉડાની हाँ सर। તું વાંચ ચલ, ઓલી ગોતે છે हिया डोशी। एक सेकंड। ભાઈ બધા ફર્स्ट વર્ડ પ્રોબ્લેમ ના પછીનો ફર્स्ट ક્વેશ્ચન। हाँ सर મળી ગયું। બોલ। મને બી મળી ગયું। Maximize z equals to 9x plus 13y subject subject to to 2x plus 3y less than equal to 18, 2x plus y less than equal to 10, x is greater than 0 and y is greater than 0. चल x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0 indicates it is our first quadrant. મોસ્ટલી બધા સમમાં તમને મળશે, આપણે ખાલી રફલી આપણે શીખે છે, જસ્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ શેડેડ રિજન શીખવાડું છું। આનું x ઇન્ટરસેપ્ટ બોલ શું આવશે? યા ડોશી ફાસ્ટ x intercept x a c by a, x intercept c by a, y intercept c by b, x intercept શું આવશે? 9 અને y intercept યા 18/3 કરવા માટે આટલી વાર લાગે? 6 કેલ્ક્યુલેટર લઈને બેસી જઈશું। બંધ થઈ ગયું, સોરી બંધ થઈ ગયું સર। 6 ઓકે। જાનવી ઉડાની તું બોલ, આનું x ઇન્ટરસેપ્ટ શું આવશે?
અને y ઇન્ટરસેપ્ટ 5, અને y ઇન્ટરસેપ્ટ 10. હા ચલ ઓકે જાનવી ઉડાની તું બોલ આનું ઓરિજિન સાઈડ કે નોન ઓરિજિન સાઈડ શેડેડ रीजन ઓરિજિન સાઈડ હા બોલ Origin side. વેરી ગુડ કેટલું બોલે છે તારો ભાઈ વચ્ચે પાછળથી અહીંયા एक second. Non-origin side. नहीं origin side. હું આમ વાઇલ્ડ લુક આપ્યું એટલે ડરી ગઈ કેમ ચેન્જ કરી નાખ્યું કેમ ઓરિજિન સાઈડ બીકોઝ ઇટ સેટિસ્ફાઈડ કેમ હા. ઓરિજિન સાઈડ બીકોઝ ઇટ સેટિસ્ફાઈડ Satisfies. Very good. Now all of you be ready with the answer. આનું x ઇન્ટરસેપ્ટ લે x9 માં y6 તો આ આપણે લાઈન જોઈન કરવાની x9 માં અને y6 આનું x5 છે અને y10 છે y10 યશવી પટેલ મારો આન્સર કેન લાય આઈધર 1 2 3 4 કોઈ આન્સર બધા લોકો સોચો કયો શેડેડ रीजन આવશે 1 આવશે 2 આવશે 3 આવશે 4 આવશે યશવી પટેલ આન્સર આપશે બાકી જોઈએ તો ખાલી ફિંગર કરી નાખો સર આન્સર યશવી પટેલ મારો શેડેડ रीजन શું આવશે તમારું શેડેડ રીજન આવશે 3 અને 5 5 છે જ નહીં આ નીચે શું છે લાઈન ના નીચે એ તો કોઓર્ડિનેટ હતી 5,0 3 ની સાઈડ આવશે 3 ના નીચેના સાઈડ વેરી ગુડ કેમ 3 નીચે જ આવશે કેમ કે કોમન પાર્ટ છે ઓરિજિન સાઈડ એટલે perfect બંધ કર તારો માઈક now this is suppose my line 2 this is suppose my line 1 line 1 origin side किए છે તો એનો મતલબ this or this is 3 or 4 is possible line 2 भी origin side બોલે છે તો 2 અને 3 is possible that's why my shaded region will be what third part my shaded region will be what third part very good white गोलाटी કોને નો સમજાણું કોણ હતો એ વરુણ હા તું જ વાંચ ચલ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન વાંચ પહેલા આમાં જોઈ લે આ લાઈન 1 નો ઓરિજિન સાઈડ કે નોન ઓરિજિન સાઈડ છે આનું ઓરિજિન સાઈડ છે તો નીચે આવશે કે ઉપર આવશે નીચે આવશે તો આન્સર શું પોસિબલ છે 3 અને 4 હા અને આનું શું છે ઓરિજિન સાઈડ કે નોન ઓરિજિન સાઈડ ઓરિજિન સાઈડ તો એનો આ લાઈન ની પોસિબલ આન્સર શું આવશે 2 અને 3 તો કોમન શું આવ્યું 3 તો આન્સર 3 સમજાણો હા સર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન વાંચ હા સર ડાયાગ્રામ માં 0 થી નીચે બધું આવશે ને લાઈન 0 થી 12 એટલે નીચેનો બધું પાર્ટ હા હા પણ 0 આ જે એક્સિસ હતું અહીંયા સુધી અહીંયા ખાલી 0,0 ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટમાં સેકન્ડ બીજા ક્વોડ્રન્ટમાં નહીં જવાનું કેમ કે આ બધા સમમાં આપેલું જ છે તમે જોઈ શકો છો x is getting equal to 0 y is getting equal to 0 બધા જ સમમાં આપેલું છે we cannot cross that border watch next up solve graphically the following બધું નહીં વાંચ LPP ખાલી સબ્જેક્ટ 2 ના પછીનું વાંચ ફટાફટ subject to 5x plus y greater than equal to 10 5x plus y हाँ greater than equals to 10 हाँ x plus y greater than equal to 6 x greater than equal to 0 y greater than equal to 0 चल फटाफट बोल आणि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट आणि x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट अनु x2 ओके y10 वेरी गुड अनु x6 y6 ओरिजिन साइड के नॉन ओरिजिन साइड फटाफट बोल origin side hey तो नहीं नॉन ओरिजिन चेक कर 0 is 0 is greater than equals to 10 ना ना नॉन ओरिजिन साइड हाँ बोला नो એનું પણ નોન ઓરિજિન સાઈડ વેરી ગુડ પછી હવે ગ્રાફ બનાવશું આપણે ચાલો બધા લોકો રેડી થઈ જાઓ તો મને બોલ આનું ક્યાં ક્યાં આવશે 2,0 થી પાસ થશે અને 0,10 થી પાસ થશે એટલે આમ જશે બીજું 0,6 અને 6,0 બીજું આમ જશે નાઉ વોટ વિલ બી માય શેડેડ रीजन 1 2 3 4 માંથી કયો આન્સર આવશે એક મિનિટ સર ચલો બાકી લોકો બી રેડી 1 2 સર 1 આવશે આખું 1 આવશે
नहीं, 1 मिनट सर. नॉन ओरिजिन साइड એટલે 1 4 सर 1 આવશે. ख्वाहिश गुलाटी, क्या आएगा आंसर? 1 2 3 4 में क्या आएगा आंसर? फिर 1 नहीं आएगा. परफेक्ट. ऑल ऑफ यू आई होप सो नाउ कंफर्टेबल, क्योंकि ग्रेटर देन है ये लाइन से तो आंसर 2 and 1 पॉसिबल है, ये लाइन से 4 and 1 पॉसिबल है, तो 1 इज योर आंसर. ख्वाहिश गुलाटी, नेक्स्ट प्लीज, थर्ड सम, फटाफट थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में थोड़ा सा. Subject to x minus y is greater than equal to -1. फैंटास्टिक सम. x minus y greater than equals to -1. 2x minus y is lesser than equal to 2. Can you tell me the x intercept, Gulati, फटाफट? -1. Y intercept? 1. Perfect, very good. Here x intercept? 1 or Wow. -2. Perfect. Now from where the line will pass, that is a very important now. यहाँ पर -1, 0. So here -1, 0. And here it is what? 0, 1. So your line will pass like this. Please all of you be careful of this part. ये आपका line L1 है. Next line क्या है? 2 is somewhere here and -0, -2 is somewhere here. So your line will pass like this. And again it is in the first quadrant only. ख्वाहिश गुलाटी, what will be my answer? My answer 1 2 3 4. What is my answer? सोचो, आप ही खुद सोचो. 2 मिनट, सब लोग सोचो. मैंने इस टाइम ओरिजिन नॉन ओरिजिन ने लिखा है, आप ढूंढो, आप सोचो, फिर बोलेंगे हम. सब लोग सोचो. ख्वाहिश गुलाटी, સર થર્ડ આવશે. હા ઉભો રે, ખાલી ફિંગર કર, મને દેખાઈ જશે. બોલ નહીં પ્લીઝ. ઓકે શિખા કોઠારી, ગુડ. ઓકે ધ્રુવ પાછળ, પરફેક્ટ. थर्ड ही है. રોનિત, જય બરાબર છે. જય 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 શેઠ, તો બોલ, શું બોલે છે જય શેઠ? જય શેઠ, हाँ सर. તો ટુ કેમ બેટા? વાય ટુ? सर इनके આનું બોલ, આનું પહેલા બોલ. ઓરિજિન સાઈડ કે નોન ઓરિજિન સાઈડ? सर नॉन ओरिजिन आवे ने. 0 is greater than equals to -1. તું ना કેમ ना બોલ? ना 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 ना. તું કેમ સાઈન જોઈને મજા લે છે? हाँ તું सर. કે ફોલ્સ? ઓરિજિન કે નોન ઓરિજિન? બોલ જય, ઓરિજિન કે નોન ઓરિજિન? ओरिजिन. હા, અને આ આપણ ઓરિજિન છે. ઓરિજિન છે. તો લાઈન 2 ઓરિજિન, એટલે લાઈન 2 ના હિસાબથી નીચે 3 4, લાઈન 1 ના લાઈન 2 ના ઉપર ઓરિજિન એની ઉપર જ છે. So 3 is a common word we are getting. This is what your answer. This is what your answer will look like. 3 આવ. Very fantastic sir. Very fantastic sir. સમજાણું આ બધાને? સર ક્વોડ્રન્ટ કેવી રીતે પ્લેસ કરવાના એ કેવી રીતે ખબર પડશે? Always first quadrant. નહીં નહીં 1 2 3 4 પ્લેસમેન્ટ કેવી રીતે આપવાની? એ તો નાનપણમાં શીખાતા ને. This is always 1, this is always 2, this is always 3. આ જ્યારે તમે મારા ખ્યાલથી 6 7 સ્ટેન્ડર્ડ માં શીખાશો ને. એ તો We are not changing that rule. We will not change. હા બેટા, નાનપણનું શીખેલું જ રાખશું આપણે. હા, તું જ બોલ. ચલો એ ક્વેશ્ચન વાંચ. ચલ નેક્સ્ટ, લાસ્ટ માર્ક માટે. ચલો તું જ વાંચ ક્વેશ્ચન બેટા. fourth subject to x lesser than equal to 4. એક મિનિટ. x lesser than equals to 4, y lesser than equal to 6, હા, x plus y lesser than equal to 6, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. હા, તો આ તો એકદમ ફેન્ટાસ્ટિક સમ છે. આ 4 થી પાસ થાય છે x ના, બરાબર છે? y ના 6 થી પાસ થાય છે, હા, અને અહીંયા બી 6 અને અહીંયા બી 6. તો કેટલા બધા પોસિબિલિટીઝ છે. ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ આ જ કહેવાય, બરાબર છે? 1 2 3 4 5 6 પોસિબિલિટી છે. ચલો સોચો, બધા સોચો. 6 પોસિબિલિટીઝ. क्या आंसर છે મારો? વેર ઇઝ માય શેડેડ रीजन?
નહીં બોલ, ફિંગર કર. હા, હું જોઉં જ છું બધાને બેટા. તું જ મને આન્સર દેવાનો છે. તારા માટે ઉભો રહું છું. વેરી ગુડ. બધા લગભગ બરાબર આન્સર બોલે છે. બોલ તું આન્સર. હેના, તને સમજાય છે હેના? શું તારા ફિંગર કર, કેટલો આન્સર પોસિબલ છે તારા હિસાબથી હેના? હેના ચલ આન્સર બોલ, તું બોલ. ઓકે, વેરી ગુડ. હેના ગુડ. પાક્કું ને? વરુણ આવ્યું? સર નથી સમજ પડતી. નથી સમજ પડતી. ઓકે, હજી કોને નથી સમજ પડતી આમાં? બોલો નિધિ કટારિયા, આન્સર બોલો, આન્સર લખો. હા, રાખો ફિંગર રાખો, એટલે હું જોઉં જ છું. વાહ, શ્રુતિ મૂલચંદાની રખા. વેરી ગુડ. એવરીવન મોસ્ટલી એવરીવન ટોલ્ડ ધ આન્સર. ઠીક છે. ઓકે, નાઉ સી હું કરું છું. x લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 4 એનો મતલબ શું વરુણ સંઘવી? x લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 4 એનો મતલબ શું? x લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 4 मतलब 0 is less than equal to 4 origin side મતલબ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. બરાબર છે? હા. તો આ બાજુ આવશે. હા. તો 2 3 અને 4 આન્સર છે તારો. બરાબર છે? હા, 2 3 4. અને આ શું કે છે? x લેસ ધેન ઇક્વલ્સ ટુ 4 એબોવ કે બિલો? બિલો ધ લાઈન. એટલે હવે આન્સર પોસિબલ શું થઈ ગયું? 3 અને 4 જ ખાલી. હા. આ શું કે છે? બિલો ધ લાઈન કીધું તો 3 4 5 6 5 6 કેમ નહીં આવે? હા, એ બધા આવશે, પણ કોમન માં શું આવશે? 3 4. હા, 3 4 એટલે મેં 3 4. આ તો કટ જ થઈ ગયું છે ને આપણું, એટલે એનો લીધું. 3 4 હવે પોસિબલ છે આન્સર. આ લાઈન શું કે છે? ઓરિજિન સાઈડ કે નોન ઓરિજિન સાઈડ? ઓરિજિન સાઈડ. તો નીચે કે ઉપર? 3 કે 4 હવે? એટલે નીચે मतलब ઓરિજિન સાઈડ કોઈ કેને मतलब કઈ સાઈડ ને કરું? આ લાઈન નું બોલ. અચ્છા, તો ઉપર આવશે. ઓરિજિન ક્યાં છે તારી? આ ઓરિજિન છે કે આ ઓરિજિન છે? સર ઓરિજિન આ આવશે ને, જે ઓરિજિન. આ ઓરિજિન કે આ ઓરિજિન? ઓરિજિન એટલે શું? ઓરિજિન એટલે 0 0. તો 0 0 અહીંયા છે? હા. ક્યાં અહીંયા છે? 0 0 અહીંયા છે જ્યાં લખ્યું છે. હા. હા, તો ક્યાં આવ્યું? ઓરિજિન સાઈડ આ ને બેટા? હા. 11th સ્ટેન્ડર્ડ માં મસ્તી કઈ રીતે લાગે છે તે? ના સર, એ ઓછું સમજાયું હતું. પપ્પા હમણાં બરાબરથી સમજજે, લફડા નો કરતો. હા સર. ચલો, બાકી લોકોને શાયદ થી સમજાનું, હજી કોઈને નથી સમજાનું તો ઉભા રહેજો વરુણ સંઘવીના સાથે. બાકી લોકો પ્લીઝ રાઇટ ધ ચેટ. હાય, આજે પાછા રાતના મળે છે ફોર રાઇટિંગ યોર એક્ઝામ.